guys, my name is Dilip Divedi and I'm from English Arena. Now guys, in this video I'm going to teach you present simple tense. Okay, I will talk about the usage of present simple tense, like when do we use this tense, and I will also discuss the formulation, the construction, the sentence structure, and we will also talk about few examples. Okay, so if you're ready, we can start. Okay, now guys, before we start talking about present simple tense, first we need to understand the subject. What is the subject? Because the whole present simple tense is based on subject. Okay, it is based on subject. So first we need to understand, this is really important. Now subject क्या होता है? So guys, sentence में, किसी भी सेंटेंस में जिस वर्ड के बारे में बात की जाती है, जो वर्ड होता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. ओके, कुछ लोग कहते हैं कि सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है गाइस, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. दिस इज नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज देयर आर मेनी सेंटेंसेस, देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट वी यूज एंड वहां पे कोई वर्ब होती ही नहीं, वहां पे कोई एक्शन होता ही नहीं, राइट? कोई काम होता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं, कोई वर्ब है ही नहीं है, राइट? आई मीन इनफैक्ट एक्शन वर्ब नहीं है. सो ऐसे कहो कि सेंटेंस में जिस वर्ड के बारे में बात की जाती है वो वर्ड उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. सो इस सेंटेंस में आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली. द सेंटेंस इज रिलेटेड टू दिल्ली. सो द वर्ड दिल्ली इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं कि सेंटेंस में कोई जो परफॉर्मर होता है, जो डूअर होता है, जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो वो भी सही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, दैट मीन्स आई टीच इंग्लिश. ये जो सेंटेंस है ये आई के बारे में, मेरे बारे में बात करता है. सो द वर्ड आई is the subject of this sentence. Okay, let's talk about the types of subjects. So guys, there are three types of subjects. Subject के तीन तरीके के होते हैं. The first one is first person subject, that is I and we, I and the we, and then we have second person subject. The second person subject is you, and then we have got third person subject, right? So there are two types of third person subject. The one is third person singular and another one is third person plural. Third person singular and third person plural. Now when you talk about the third person singular, अगर third person singular की बात करो तो he, she, it, या नाम ही, शी, इट, या किसी का भी नाम, या वन पर्सन या वन थिंग. जब भी हम कभी ही, शी, इट या किसी नाम के बारे में बात करते हैं, यानी जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट या कोई किसी के नाम से शुरू होता है, या ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी एक पर्सन, किसी एक इंसान की बात करते हैं या किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, then we say that that's a third person subject. Like for example, just let's say that my father or your sister or his friend. Okay, so when you say his friend, that means you're talking about one person. You're talking about one person. When you say that my sister, that means you're talking about one person. You don't say that my sisters. Okay, my sister. So he, she, it's, or any name or one person or one thing, third person singular. Now when you talk about third person plural, so third person plural में जो सबसे पहले is they, and then it's more than one person or one thing. For example, women, children, right? Players, doctors, right? So तीन तरीके का सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज आई एंड फर्स्ट पर्सन आर आई एंड वी. सेकंड पर्सन would be you, and third person, there are two types of third person subjects. Third person singular, which is he, she, its, name or one person and one thing, and then we have got third person plural, that is they or more than one person or one thing. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, या अगर सेंटेंस में कोई एक्शन है तो उस एक्शन को करने वाले, उस काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द यूसेज, कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कब करते हैं. ओके, सो गाइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डेली रूटीन, यानी ऐसी चीजें जो आप रोज करते हो. It talks about regular activity, right? ऐसी चीज़ों जो आप रेगुलरली करते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल रोज करते हो, या हफ्ते में एक दिन करते हो, या महीने में एक बार करते हो, या
साल में एक बार करते हो. So these things, so whenever you talk about these types of things, you always use present simple tense. For example, हम कहें कि हम हर साल दिवाली मनाते हैं. So जो दिवाली मनाना जो है वो हर साल होता है. This is present simple tense. अगर मैं टेंस को बोलूँ, सेंटेंस को बोलूँ, हम हर साल दिवाली मनाते हैं. We celebrate दिवाली every year, right? So this is present simple tense. और या फिर मैं बोलूँ कि वो रोज अपने ऑफिस जाता है. He goes to his office every day. This is present simple tense. सो ऐसी कोई भी चीज जो रेगुलरली होती है, ऐसी कोई भी चीज जो रोज होती है, जब भी हम कभी उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ जो अक्सर होती है, राइट? सो उन चीज़ों के बारे में जब भी हम कभी बात करते हैं, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके गाइज, वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट. मतलब ऐसी चीज़ें जो हमेशा एक जैसे होती हैं, हमेशा एक जैसे होती हैं, या एक ही मतलब उनके पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं. तो फॉर एग्जांपल सूरज पूरब में निकलता है, तो मतलब सूरज पूरब में निकलता था, निकलता है और फ्यूचर में भी निकलेगा. Right, so that's when we talk about the general truth, we also use present simple tense. Okay, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Let's proceed and talk about the formulation. So I'll take us. Alright guys, so now let's talk about formulation, like how do we make sentences. So basically, and guys, I'm going to talk about affirmative sentences first. I'll talk about affirmative first. So guys, there are two rules for affirmative and present simple. The first one is, first we start with subject. This is my rule one, I would say that. So we start with subject and then we use the base form of the verb. You can also say the first form of the verb, and then we add s or es with the verb. So for example, go becomes goes, speak becomes speak, tell becomes tells, play becomes plays, and then we use the object and then other words. Okay, so this is the formulation. Now when do we use this formulation? हम इस formulation को use कब करते हैं? So guys, whenever the subject of your sentence is he, she, it, नेम, कब जब भी कभी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, या किसी का नाम होता है, या किसी भी सेंटेंस में आप किसी एक इंसान की बात करते हो, जैसे आपने कहा माय फ्रेंड, लेट्स से दैट, राइट, माय फ्रेंड. सो राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. व्हाई? बिकॉज यू आर सेइंग माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स. अगर एक से ज्यादा की आप बात करोगे तो आप कहोगे माय फ्रेंड्स. ओके, दैट इज नॉट द केस. सो जब भी कभी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम होता है, या किसी एक इंसान की बात करते हो, देन फर्स्ट यू स्टार्ट विद सब्जेक्ट, देन यू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हो, एंड देन you talk about object, and after that the other words. This is how the sentences are formulated. Let's say that he drives very fast. He drives very fast. So guys, ड्राइव की स्पेलिंग होती है D-R-I-V-E, बट बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, और हमें पता है कि यार ही के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड होता है. इट डिपेंड करता है कि कहाँ पे एस यूज होगा और कहाँ पे ईएस यूज होगा. ये स्पेलिंग पे डिपेंड करता है. दैट डिपेंड्स ऑन स्पेलिंग, दैट हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड. मैं उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हम ही ड्राइव्स, राइट, चूंकि सब्जेक्ट हमारे जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ही, सो ड्राइव क्या हो गया, ड्राइव्स हो गया. He drives very fast. He drives very fast. या यहाँ पे she calls me every day. So if you say she call me every day, that's incorrect. That is not the correct sentence. You will say that she calls me every day. She calls me every day. क्योंकि हमें पता है कि he, she, it या किसी भी नाम के साथ हम क्या करते हैं, हम verb में s या es add करते हैं. Or you can also say that my friends plays cricket every Sunday. My friends plays cricket every Sunday. Or you can say that my father gets up 5 a.m. in the morning, right? So my friend plays, my father gets up, he goes to his office on bike. So basically guys, and this is what this is something that we make mistakes. कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं he go to his office on bike. Incorrect, right? The correct sentence is he goes to his office on bike. Okay, so this is the rule 1. Now let's talk about the rule 2. What is the second rule is, guys, जब भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा इंसान या एक से ज्यादा चीजें होती हैं, राइट, सो हम क्या करते हैं, हम वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं. ओके, सो द फॉर्मुलेशन इज वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट, देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट
other words. Okay, now what is the difference between these two formulation? अगर मैं इस formulation की बात करूं और इस formulation को इसके साथ कंपेयर करूं तो डिफरेंस क्या है? यहां पे आप वर्ब में एस या ईएस ऐड कर रहे हो और यहां पे आप वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं कर रहे हो. सो फॉर एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश इन इंग्लिश अरीना. आई टीच इंग्लिश इन इंग्लिश अरीना. गाइज आपने देखा यहाँ पे टीचर्स नहीं हुआ. दिस इज इन ओके. यू कैन नॉट ऐड, यू शुड नॉट ऐड एस और ईएस इन केस लाइक इफ द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इज आई, वी, यू, दे. सो फॉर एग्जाम्पल यू विल से ही गोज टू स्कूल, I go to school, right? She cooks food, you cook food, right? So he goes, she goes, it goes, John goes, I go, you go, we go, they go, my friends go. Okay? So I hope कि आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे s ऐड करना है और कहाँ पे s ऐड नहीं करना है. Alright guys? So guys, till now we spoke about affirmative. Let's talk about negative. How do we make the negative sentences in present simple tense? So guys, what happens? हम negative sentence बनाने के लिए we use do or does. हम do or does use करते हैं कि these are the helping verbs. They are used in present simple tense. अब एक question आता है कि do कहाँ use होगा और does कहाँ use होगा. Very simple guys. Does use होता है हमारा he, she, it या किसी भी नाम के साथ हम does यूज करते हैं और do यूज करते हैं हम I, we, you और they के साथ. ओके, I, we, you, they के साथ हम do यूज करते हैं. That means he does not, she does not, it does not and John does not. I do not, you do not, we do not, they do not. Okay, so और again मैं यहाँ पे दूसरी बात बताऊंगा आपको कि इसमें भी हम गलतियाँ करते हैं because being an English teacher, I have observed many times. It's been around 10 years. I have been teaching English for more than 10 years, and I have seen people what do they say that? They say that he don't know about you. Okay, he don't know about you. That's incorrect guys. We don't use do with he. With do we use does. Okay, the correct sentence is he does not know about you or he doesn't know about you. Comma point. Let's talk about the formulation. How do we make sentences? So guys, subject, then we use do or does. Okay, we use do or does. ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई नाम है तो डज, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे है तो डू. ओके, सब्जेक्ट देन डू और डज, देन वी यूज नॉट because we are right now we are talking about negative. Then we use the first form of the verb, and then after that we use the object and other word. Okay, this is how the sentences are formulated. Guys, आप जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में एस या ईएस वर्ब के साथ ऐड नहीं होता है, वेदर सब्जेक्ट इज ही और आई. मतलब कोई भी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, राइट, उसमें हम एस या ईएस नहीं यूज करते हैं, राइट, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सो बेसिकली एस और ईएस, ओके, दे आर ओनली एडेड इन affirmative sentences, but in negatives we don't do that. Let's go for an example here. So अगर मैं बोलूं कि वो आजकल मेरे घर नहीं आता है, वो आजकल मेरे घर नहीं आता है. सो गाइस, कितने लोगों की बात हो रही है? एक इंसान की बात हो रही है, किसी एक इंसान की. वो और वो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? विल से ही. अब ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू और डज. ही के साथ हम यूज करेंगे, ही के साथ क्या यूज करेंगे? डज यूज करेंगे. सो क्या हो जाएगा? ही डज. ओके, ही डज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही डज. देन इट सेज यूज नॉट, सो ही डज नॉट. Now it says the first form of the verb. क्या है verb हमारी? आना. आने की इंग्लिश क्या होगी? come. So he does not come. He does not come to my home. He doesn't come to my home nowadays. Okay guys, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्पेलिंग के बारे में बता देता हूँ. nowadays जो है वो एक वर्ड होता है. This is just one word. It is not like now and then they are and then days. It's one word. Okay, nowadays. So he doesn't come to my home nowadays. Okay, अगर यहीं पे होता कि तुम, let's take an example, तुम उसके घर नहीं जाते हो. अगर होता तुम उसके घर नहीं जाते हो तो क्या होगा? यू. अब यू के साथ डज यूज हो गया, डू यूज होगा, डू यूज होगा. आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज करते हैं डू. सो यू डू नॉट गो टू
his home. You do not go to his home. तुम उसके घर नहीं जाते हो. So basically guys, he doesn't, let's take an example. He does not speak English. He does not speak English. She does not speak English. It does not work properly. And John doesn't speak English, right? So with he, she, it's, and name or one person, let's say that my friend doesn't play cricket, or let's say that my friend doesn't cook foods, okay? So with he, she, it's, or any name. Does not with I, we, you, they, do not. So for example, I do not speak English, you do not speak English, they do not speak English, and we do not speak English. So he does not, she does not, it does not, John does not, I do not, you do not, they do not, we do not, my friends do not, players do not, children do not, women do not, and यहाँ पे does not. I hope that you have understood it. Okay, this is the formulation. And now guys, we are going to talk about the interrogative, like questions. How do we formulate the questions? Now before we talk about the question, let me just tell you something about questions. So guys, questions दो तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? यार ऐसे क्वेश्चन जिनको आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो. ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड जस्ट बाय सेइंग यस और नो. फॉर एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली एंड इफ समबडी आस्क्स मी एंड सेज दैट डू यू लिव इन दिल्ली एंड आई से यस. ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, मैंने कहा क्या आप दिल्ली में रहते हो, आपने कहा हाँ, आई गॉट माय आंसर, राइट. एंड फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, यू से दैट नो, मुझे मेरा आंसर मिल गया. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड close-ended question. Now let's talk about open-ended question. So open-ended question वो होते हैं जिनको आप हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हो, right? You need to give some explanation. You need to give you need to give some reason. So for example, अगर मैं बोलूँ कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो. नाउ दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय सेइंग यस और नो. कैन यू से यस और नो. मैं बोलूं आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, क्या आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो? आपको बताना पड़ेगा, आपको रीजन देना होगा कि दीज आर द रीजन, दैट्स व्हाई आई डोंट स्पीक इंग्लिश. नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन. यानी यार इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके लिए, इस तरह के वर्ड्स होते हैं. Alright, so let's talk about interrogative. Just give a few seconds. Now let's talk about the questions, the interrogative sentences. How do we make sentences? So again guys, to talk about interrogative, we use do or does. Okay, these are the helping verbs for present simple. So how do we start the sentence? We start with do or does. Do or does. And right now I'm talking about close-ended questions, right? All the questions that can be answered by saying yes or no. Is do or does. Then we use subject. Then we use the first form, the verb. Then we use object and the other word. This is how the questions are formulated. सबसे पहले हम do या does use करते हैं. Subject के ऊपर डिपेंड करता है, he, she, it या कोई नाम है. Does, I, we use they है तो do. Okay. Now let's take an example. Does she live here? Okay, does she live here? Guys, this word is pronounced as here. Here. I have heard most of the people, they pronounce it as here. So they say come here. No, that's incorrect. Come here. Come here. Okay. So does she live here? क्या वो यहाँ रहती है? Close-ended question, right? Close-ended question. Let's say another example. Do you help him? Do you help him? क्या आप उसकी help करते हो? Close-ended question. Do you help him? Now देखा आपने यहाँ पे कि she के साथ does आया हुआ है, you के साथ do आया हुआ है, right? So he, she, it, name or one person does. I, we, you, they do. Let's go for another example. Does your sister study English? Does your sister study English? क्या आपकी बहन इंग्लिश
पढ़ती है, राइट? योर सिस्टर, हम सिस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, योर सिस्टर, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, राइट? सो इसलिए एक इंसान के साथ क्या आता है? डज आता है. ओके, लेट्स गो फॉर अनदर एग्जांपल. डू आई कॉल यू? डू आई कॉल यू? क्या मैं आपको कॉल करता हूं? डू आई कॉल यू, राइट? ओके, सो आपने देखा यहां पे डू आया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ क्या आता है? डू आता है. सो आई, वी, यू, दे, डू, एंड ही, शी, इट और एनी नेम does. Now इसी के साथ अगर guys आपका, for let's take an example, अगर can you give me this duster please? Thank you very much. Now let's talk about this open-ended question. Okay, how do we formulate the open-ended question, guys? It is very simple. The only thing what you need to do is that you need to start your sentence with the question word. Okay, all right, please just catch it. Thank you very much. So how do you do that? You start your sentence with that question word, okay? And then the formulation is same. So question word, then do or does, then subject, then the first form of the verb, then object and the other word. Let's take an example. Why does he speak fast? Okay, why does he speak fast? वो तेज क्यों बोलता है, राइट? वो तेज क्यों बोलता है? Let's go for another example. When do you buy these things? इन चीजों को आप कब खरीदते हो, राइट? When do you buy these things? Or how do you buy these things? Okay, so what is the difference, guys? The formulation is same. However, if it is open-ended question, what do you do is that you use the question word at the starting of the sentence, comma point. So this is how the questions are formulated. Now I will talk about the questions and negative, like interrogative and negative sentence. Okay, give me a few seconds, I'll be back. All right, now we're going to talk about interrogative and negative question. मतलब वो question भी होते हैं और उसमें not भी होते हैं. For example, आप English क्यों नहीं बोलते हैं? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं? और मे बी फॉर एग्जाम्पल, आप उस डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते हैं, राइट? आप उस डॉक्टर से क्यों नहीं बात करते हैं? सो वी वुड डिस्कस द फॉर्मुलेशन. सो वी स्टार्ट विद डू और डज. ओके, डू और डज, देन वी वुड गो फॉर सब्जेक्ट एंड देन नॉट, because right now we are talking about interrogative and negative sentence. Then the first form of the verb, object and the other word. Now this is how the question is formulated. Okay, now एक चीज आपने ऑब्जर्व करा गाइस कि जो एस या ईएस हमने ऐड किया था वो सिर्फ अफर्मेटिव में किया था. अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहीं पे भी हम एस या ईएस ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. Why do you not help him? आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? ओके, और why does he not call him? I'm sorry, here why does he call me? वो मुझे कॉल क्यों नहीं करता है? So guys, what happens? So this is, so do, okay. Now why do here? Because हमारा तो सब्जेक्ट जो है वो you है, you के साथ में do आता है, does नहीं आता. I, we, you, they के साथ में do आता है. He, she, it या किसी भी नाम के साथ में does आता है, right? Okay, and yes, this is actually the open-ended question. और open-ended question में हम क्या करते हैं? question word सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए formulation अब इसके आगे आप चाहो तो आप बढ़ा सकते हो. अब ये हो गया, right? So सबसे पहले question word, फिर do or does, फिर subject, फिर not, फिर first form the verb and फिर object. This is how the questions are formulated, guys. All right, now guys, I'll do one more thing for you.
So I'll tell you how to practice for present simple tense, but before I talk about this practice, let me talk about the mistakes that we make. The mistakes that we make when we use present simple tense, whether in speaking or in writing. So guys, when you talk about present simple tense, we make two types of mistakes, two kinds of mistakes. The first one is the formulation mistake. So पहली mistake जो होती है वो formulation से related होती है, construction से related होती है. For example, जहाँ पे हमें do use करना है वहाँ पे हम does use करते हैं, जहाँ पे हमें does use करना है वहाँ पे हम do use करते हैं. So rather than saying that he doesn't know anything about me, people say he don't know anything about me, right? So he के साथ does आना चाहिए, लेकिन आपने क्या बोला, do बोला. So this is, so another thing is that जहाँ पे s या es add होना चाहिए वहाँ पे लोग s या es add नहीं करते हैं. So for example, you say that my father work in HDFC Bank. So rather than saying my father works in HDFC Bank, if you say my father work in HDFC Bank, incorrect, because my father third person singular और उसके साथ में s या es add करते हैं. So this is the first step of the mistake that we make in present simple tense. The second mistake that we make, and guys, to be very honest, I mean, I have heard many people, even they have got excellent communication skills, they speak really nice English, right? But they make the mistake. What is that mistake? Is that what they do, they swap the tense. So rather than using present simple, what they do, they use present continuous tense, right? So for example, whenever you have to talk about the long lasting situation, whenever you are talking about permanent situation, there you should use present simple, not present continuous tense, because present continuous tense talks about temporary situation. By the way, मेरी एक वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है. अगर आप चाहो तो आप जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी वीडियो देख सकते हो. सो बहुत सारी ऐसे जो लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन होती हैं, जो परमानेंट सिचुएशन होती हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो देयर वी डोंट यूज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी यूज प्रेजेंट सिंपल. अब लोग करते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यमुना विहार में रहता हूं, सो आइडियली आई शुड से दैट, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूं, सो आइडियली आई शुड से दैट आई लिव इन दिल्ली, बट व्हाट पीपल से, दे से दैट आई एम लिविंग इन दिल्ली. दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस, राइट? और फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि I teach English. So what people say that I am teaching English. The other day I was talking to one of my students and he said that, I mean, he was giving his introduction and so he said that my company is providing XYZ services. Okay, my company is providing XYZ services. No guys, this is not the correct sentence. The correct sentence would be, so guys, इसमें अगर मैं बात करूँ formulation की, grammar बिल्कुल सही है लेकिन correct sense use नहीं हुआ है. So my company is providing XYZ services. This is present continuous tense, and present continuous tense doesn't talk about permanent situation. The correct tense should be my company provides XYZ services. My company provides XYZ services. All right. So this is how, I mean, this is one of the mistakes that people make. So don't say that if like for example, if you like, let's say if you live in Mumbai, so don't say that I'm living in Mumbai, say that I live in Mumbai. Okay, I am living in Mumbai, ये भी हो सकता है, ये भी सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन सिचुएशन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ और किसी काम से मैं मुंबई गया, राइट? मैं मुंबई गया और वहां पे रह रहा हूँ. लेट्स से फॉर 1 महीने के लिए मैं मुंबई गया और मैं वहां पे लेट्स से किसी होटल में, ABC होटल में रह रहा हूं. सो अगर मैं वहां पे कहूंगा, देन आई वुड से दैट आई एम स्टेइंग इन होटल ABC. I'm staying in hotel ABC because that is not my permanent residence, right? Mumbai is not my permanent place. I don't live in Mumbai, but temporarily I'm living over there. Temporarily, I said I'm living over there. So whenever you're talking about temporary action, दूसरे example के लिए, let's talk about another situation or another scenario. So my job is to teach English, right? I teach English my people. Let's say मेरा कोई दोस्त है जो अकाउंटिंग में काम करता है, I'm a commerce graduate, I have good information of accounting as well. उसको मेरे हेल्प की ज़रूरत होती है और मैं कुछ दिनों के लिए उसकी हेल्प करता हूँ. ठीक, लेट्स से एक एग्जांपल कि मैं 10, 15, 20 दिन के लिए मैं उसकी हेल्प करता हूँ. अब मुझे मेरा कोई दूसरा दोस्त कहता है, गाइस, I mean, these days I don't see you. Where are you, man? So I say that, these days I'm helping my friends. Okay, these days I'm helping my friend. So I didn't say that I help my friend. I didn't say that, right? Because
because helping my friend is not my job. My job is to teach English, but because he has some issues, he has some problems, so temporarily मैं अभी उसकी आजकल मैं उसकी help कर रहा हूँ. So there we would say that these days I'm helping my friend. So ये एक mistake हम करते हैं guys. Okay, just एक second आप मेरे को और दो. I would write down 6 sentences and I'll help you how to practice for present simple tense. Just give me a minute. Hi guys, I'm back again. So let's start. So what I have done is that I have written here 6 sentences. Alright, I have written here 6 sentences. मैंने यहाँ पे 6 sentences लिखे हैं. Sentence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I'm going to tell you how to practice. किस तरह से आप guys एक sentence से 6 sentences बना सकते हो. Affirmative, negative, question with the close-ended question, and interrogative and negative, like close-ended question, open-ended question, interrogative and negative with open-ended question, like interrogative and negative, the open-ended question. Now how do you need to what do you need to do? You need to practice, and how you can practice is like, for example, he goes to his school, he does not go to his school, does he go to his school, does he not go to his school, when does he go to his school, when does he not go to his school. All right, okay, office word hai. So he goes to his office, he doesn't go to his office, does he go to his office, does he not go to his office, when does he go to his office, when does he not go to his office. All right, let's take another example. I speak English, I do not speak English, do I speak English, do I not speak English, why do I speak English, and why do I not speak English. This is how you need to practice. अगर आप इस तरह से practice करें guys, you need to practice it for minimum 7 to 10 days. और अगर आप इसी तरह से practice करते हैं, एक sentence का 6 sentence बनाओ, और इसी तरह से अगर आप practice करते हो तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी he के साथ ऐसे es लगाने की, he के साथ does use करने की. मतलब आपको बिल्कुल आपकी आदत हो जाएगी he, she, it or any name या किसी भी एक इंसान के साथ ऐसे yes लगाने की, उसके साथ does use करने की, I, we, you, they के साथ में do use करने के, ऐसे yes नहीं लगाने की. So basically what you need to do is guys, you need to practice, because practice is very important. ज़्यादातर होता क्या, लोग YouTube पे videos तो देखते हैं लेकिन उसकी practice नहीं करते हैं. और अगर आप practice नहीं करोगे, let me be honest with you guys, it would be really difficult. In fact, I would say that it would be impossible for you to speak in English. So if you really want to improve your communication, if you want to improve your English language, what you need to do, you need to practice. Okay, you need to practice a lot. अगर आपके English basic है तो practice करिए. अगर आप practice करेंगे, धीरे धीरे आपको बोलने आने लगेगा. तुरंत रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि चीज़ें टाइम लेती हैं. राइट, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे and you would be able to speak. किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, if you really need any help, what you can simply do is that you can contact me, you can call me, or maybe that if you are from Delhi and if you have time, you can visit to my center. My center is located in Yamuna Vihar, right? You can visit to my center, or you can contact me, or you can go for my classes as well. My classes are available online and offline. Okay, मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. प्रैक्टिस करिए गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. लाइक करो इस वीडियो को मेरे दोस्त, और आई वुड रियली अप्रिशिएट यू मेरे दोस्त. आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.